अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। Today I'm going to share something with you. I have ordered something and I am going to open this parcel और मैं अभी इसको अनबॉक्स करूँगी एंड फिर आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी। मैंने जो ऑर्डर किया था, मैंने एक्चुअली इंडीड लैब्स का कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, 3 प्रोडक्ट्स एंड क्योंकि ये पाकिस्तान की नहीं है ब्रांड, तो ये पाकिस्तान में ऑब्सेस्ड ब्यूटी एक इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। सो आई हैव रिसीव्ड दिस पार्सल नाउ एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस। So these are the 3 things I have been waiting for, जिनका मैंने ऑर्डर किया था। थोड़ी सी हालत इसकी खस्ता हो गई है, लेकिन ओके। So the first thing is this. This is Indeed Laboratories की moisture jelly. It's legally hydronate, और ये क्या है कि इसमें फीचरिंग जो है इसकी, that is hyaluronic acid and patch H2O DM, acid hyaluronic and patch H2O DM, एक ये है. This is for the moisture for face, and its fragrances जो है free from fragrances, colorants, denatures, alcohol, and it's vegan. so these इंडीड लैब्स का लेबोरेटरीज का ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर फ्रेगरेंस फ्री एंड लेस काइंड ऑफ केमिकल फ्री. So this is how it looks like. Hydroloron moisture jelly. This one I have heard that it's the best moisture jelly which you can use. That's how we open it. I will use it and then I will share my review. तो ये इस तरह है. It looks like this. एंड इसकी कोई पाकिस्तानी जो प्राइस थे वो 3,800 I guess. Total I have ordered these 3 things. Okay, Retinal Reface Hydroloron Moisture Jelly and Retinal Reface Eye Cream. और इनके जो था नेट अमाउंट जो थी, मेरा जो बिल था, दैट इज़ 11,000. तो ये 3 चीज़ें 11,000 की आई थी. एक ये हो गई हाइड्रोलरॉन की मॉइस्चर जेली बॉम्ब इसको बोलते हैं. सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रेटिनल रीफेस आई क्रीम. ये भी इंडीड लेबोरेटरीज की है एंड इट्स फॉर डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस एंड पफिनेस. It has retinol and it's for eyes, and this is how it's look like from inside. It's kind of the tiny one. Yeah, here it is retinal reface. I don't know ये इसको फोकस क्यों नहीं कर पा रहा. Come on. Yeah,
This is how it looks like. This is also fragrance free, there says, and it helps. I don't know why it's not focusing, but it helps to visibly reduce the appearance of dark circles, fine lines, and puffiness. ये तो यूज़ करेंगे, then I'll come to know if it works or not. ये इस तरह इसका पंप है, and इसको ऐसे हम करेंगे और ये यूज़ करेंगे. So this is the eye cream. Second thing, and the third and the final thing is Retinal Reface Skin Resurfacer. Sun Refacer and for fine lines, wrinkles, poreless, rides, atlas. I don't know what is this written on it, but retinal and buckage oil. खैर ये है, ये भी इंडीड लेबोरेटरीज का ही है. एंड यहाँ पे ये देखें, ये मेंशन हुआ है कि ये हम नाइट टाइम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पे. इस पे भी दे हैव मेंशन कि ये आई क्रीम है, इसको हम नाइट टाइम पे यूज़ करेंगे. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. एंड we can use this at day and night anytime you want to moisture your face. So let's open this. Okay, there you go. Okay, ये है Retinal Reface. It's for the face. This retinol is eye cream, especially they have made it for eyes, क्योंकि eyes का जो हमारा एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं. इट हैज़ रेटिनॉल, लेकिन ये हमारे आइज़ के लिए स्पेशली उन्होंने उसको इस तरह से बनाया है कि ये कम किसी को हार्म ना करे और इरिटेशन के बगैर ये हम यूज़ कर सकें. दिस वन इज़ फॉर द फेस. रेटिनॉल का ये है कि इट्स only can be used at night. This modern formula combines retinol, baggage oil, peptides, and plant-based moistures. No, microspheres. Actually, I was reading from the mobile, but वो इतना ज़्यादा उसको focus नहीं कर पा रहा. To help deliver softer, smoother, and visibly younger looking skin. Okay, अब ये भी इसका भी पम्प सिस्टम है. यू कैन ओपन इट एंड देन यहाँ से इसको हम यू कैन यूज़ दिस. ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं. 11,000 की ये तीनों चीज़ें मुझे मिली हैं. एक्चुअली ये है कि दीज आर ओरिजिनल एंड एक अच्छी ब्रांड की हैं, तो ज़ाहिर है जितना अच्छी चीज़ होगी उसके प्राइस तो फिर उतने ही हो सकते हैं. सो दिस इज़ द मॉइस्चर जेली बाम, दिस इज़ फॉर आई cream, and this is the retinal reface for the face. These 3 things, and I just wanted to share this with my YouTube audience and family. Thanks for watching. I would like to share my views on this after using this. Let me know if you like this video. Like, comment, and subscribe, please.